All worthy directors, teachers, and all the students. Today we all are gathered here for an IAC session on pollution control day. I would like to invite Professor Komal for sharing her view to the students and also tell the student on how we control the pollution. Thank you, Professor Hina. Worthy Director Sir, respected staff members, my dear students, a very good afternoon to one and all present over here. Today I am here to discuss about International Pollution Control Day that we are celebrating on 12th of December 2025. And we all know that in our environment, a major cause of pollution is like dust emitting from factories, and so many things are there. And now I would like to start my session. Firstly, I would like to ask some question to you all. तो मतलब स्टार्ट ऐसे करेंगे कि डे वन से, कि जब हमारा स्टार्ट होता है दिन, तो आप दिन कैसे स्टार्ट करते हो? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सांस, राइट? दैट वाज माय क्वेश्चन, और यही मैं आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हम क्या लेते हैं सबसे पहले? सांस, है ना? तो हम ये सोच के सांस लेते हैं कि सांस तो हम एटलीस्ट ले सकते हैं, ये तो कोई पेड चीज नहीं है जो जिसके बारे में मतलब मैं बात करने जा रही हूँ, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन को अगर इंटर रिलेट करें तो सांस ले रहे हैं हम हवा में, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग ताजी हवा में सांस ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो हवा बहुत ही शुद्ध है, बहुत ही साफ है, और हम लोग बहुत अच्छी जो हवा है वो इनहेल कर रहे हैं? ऐसा कुछ लगता है आपको? नो। तो इसका मेजर कॉज क्या है? पोल्यूशन। तो उसी के बारे में जो आज का जो हमारा सेशन है पूरे का पूरा डिपेंड करेगा। तो हम रोज देखते हैं ये कॉज, हमें पता है कि पोल्यूशन हो रहा है, हमें पता है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री है जहां से धुआं निकल रहा है डेली बेसिस पे, हम लोग नोट भी करते हैं, ठीक है, हम महसूस करते हैं, हम लोग देखते हैं, हम लोग फील करते हैं, और हमें पूरी नॉलेज है उस चीज के बारे में कि पोल्यूशन इमिट हो रहा है, हमें हार्म करेगा, हमारी फ्यूचर जनरेशन को हार्म करेगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, घर वाले हैं, उनको हार्म करेगा, हमें पता होता है। बट फिर भी हम क्या करते हैं? उसको निग्लेक्ट कर देते हैं समटाइम, और उसके बारे में हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारा पोल्यूशन कैसे कंट्रोल हो सकता है। तो सुबह की स्टार्टिंग से ही हम लोग जो मिट्टी, गर्दा, इन चीजों में उलझ जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा दिन इन्हीं सब में गुजर जाता है। जब हम जा रहे हैं, अब हम कॉलेज से आ रहे हैं, लेट्स सपोज मैं कॉलेज को आ रही हूँ, ठीक है, तो क्या है, हम रास्ते में आ रहे हैं, डस्ट है, फिर पॉल्यूशन, यहाँ आ रहे हैं तो कितनी ही चीजें हम लोग खुद एनालाइज करते हैं कि यहाँ से जो पॉल्यूशन है हो रहा है, हम लोग प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, हम लोग ट्रीज कट करते हुए देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हमारे आसपास कुछ फैक्ट्रीज है जहां से धुआं निकल रहा है और ये हमें ही हार्म करेगा, सब चीजें हमें पता होती हैं, राइट। और मतलब कैसा कैसा आपको लगता है कौन कौन से सोर्सेज है पोल्यूशन के? एयर पोल्यूशन की बात कर रही हूँ सबसे पहले मैं, कौन कौन सा आपको लगता है कॉज है पोल्यूशन का? फैक्ट्री का धुआं और व्हीकल्स का धुआं, है ना। तो आपको क्या लगता है, क्या ये कंट्रोलेबल है या नहीं है? कंट्रोलेबल है, कंट्रोलेबल, राइट। तो कंट्रोलेबल किस सेंस में है, किस वे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं आपको एयर पोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो एयर पोल्यूशन में क्या है, हम लोग एटलीस्ट वैसे तो जो फैक्ट्रीज होती है वो आउट ऑफ वो रेजिडेंस एरिया होती हैं, और अगर कोई नहीं है तो उसके लिए हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं या फिर उनको उस चीज के लिए एक्शन भी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर जो हम अपने घर से स्टार्ट कर सकते हैं पोल्यूशन का कंट्रोल, वो क्या है कि हम जो व्हीकल्स है, कारपूलिंग सुना है आपने? हम कारपूलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कारपूलिंग में क्या है कि हम अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ व्हीकल शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो मतलब अगर हम व्हीकल यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो यूज करना भी चाहिए, आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए ही बनाया गया है, हम भी यूज करते हैं। बट द थिंग इज, जो प्रॉब्लमेटिक चीज है कि हम बार बार उसको यूज करते हैं और हम उसके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पाते। मतलब क्या है कि जो स्कूटी पे जा रहा है, अब उसको ऐसा है कि अगर हमने साथ वाली गली में जाना है, साथ वाली शॉप पे जाना है, तो वहां पे भी जाके हम क्या करेंगे कि हमें व्हीकल चाहिए, हम वहां तक व्हीकल पे ही जाएंगे। तो वहां तक तो आप एटलीस्ट वॉक इन डिस्टेंस पे है तो वॉक इन जा सकते हो ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा सम टाइम वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक आप ये स्टार्ट कर सकते हो कि आप बस में ट्रैवल कर लो 1-2 बार। उससे क्या होता है, उससे क्या है कि हम लोग जैसे 10 लोग आ रहे हैं, 10 लोग अपनी अपनी कार में आ रहे हैं,
उसकी जगह अगर 10 लोग एक ही बस में आएंगे तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा या नहीं? आप लोगों को पता है जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इतना खराब हो चुका है, दिल्ली या फिर अब पंजाब का भी, और बाहर कहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ का भी देखें तो बहुत ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है खराब हो चुका है। अभी मैम एक बार हमसे मेरे से शेयर कर रहे थे कि जो हमारा गोविंदगढ़ वाली साइड का एरिया है, यहाँ पे जो पत्ते हैं ना वो भी इतने फ्रेश नहीं दिख रहे हैं, कि पत्ते हम लोग ग्रीन पत्ते नहीं देख पा रहे हैं। तो उसका मेजर कॉज क्या है? पोल्यूशन है कहीं ना कहीं। तो वो जो पोल्यूशन है वो हम लोग ही तो कर रहे हैं। हम लोग ये मैं सोचते रहेंगे कि गवर्नमेंट आएगी, कोई नई सरकार आएगी, वो ना जो एयर पोल्यूशन है उसे कंट्रोल करके एयर क्वालिटी इंडेक्स को मतलब सही कर देगी। क्यों कर रहे हैं हम वेट? हम खुद से भी तो कर सकते हैं वो चीज। अगर आप 2 फ्रेंड्स सेम रूट से आ रहे हो तो आप लोग शेयर कर लो व्हीकल, इकट्ठे आ जाओ, उससे पोल्यूशन कंट्रोल, ट्रैफिक भी कंट्रोल, कहीं ना कहीं तो हम अपना कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, राइट? तो ये ठीक उसकी बातें जो एयर पोल्यूशन हम लोग देखते हैं और हम लोग फील करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर एक सेकेंड कोई पार्ट देखा जाए, अगर मैं वाटर पोल्यूशन लूं तो आपको क्या लग रहा है कि जो हमें वाटर प्योरीफायर लगाने की जरूरत पड़ रही है? आज घरों घरों में वाटर प्योरीफायर्स है, और जो हिली एरियाज होते हैं ना, आप लोगों ने अगर विजिट किया है या नहीं किया, जो हिली एरियाज है, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है वहां से तो मैं थोड़ा शेयर कर पाऊंगी आपके साथ कि वहां पे लोग बहुत टाइम मतलब अब किसी किसी घर में शौक के लिए लगा लिया तो लगा लिया, या फिर किसी लोग जो लोग हैं शहरों में शिफ्ट हो गए उन्होंने लगा लिया। अदरवाइज जो मतलब ऐसा है कि प्रॉपर हिली एरिया से लोग हैं, वो लोग पानी नेचुरल वे से लेते थे, मतलब नेचुरल वे से पानी लेने जाना और वहां का पानी पीना, तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। और अभी भी उनको प्योरीफायर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। उनका वाटर का जो हम देखेंगे क्वालिटी और हमारे वाटर की देखेंगे तो बहुत फर्क है। तो वो किन चीजों से हो रहा है? अब बताओ यार, वाटर पोल्यूशन के क्या कॉजेज है, क्या कारण है वाटर पोल्यूशन, किस वजह से होता है? आपने बोला फैक्ट्री के धुएं से एयर पोल्यूशन हो रहा है, राइट? केमिकल्स है ना, वही केमिकल्स जो फैक्ट्री का है वो, हाँ, प्लास्टिक वेस्ट। और समटाइम कैसा है कि जो मतलब ज्यादा पानी वाली जगह है वहां पे, जो बहुत बैकवर्ड एरियाज है वहां पे क्या है कि जो पशु वगैरह नहलाने उसके लिए भी यूज कर लिया उसको, या फिर प्लास्टिक अगर घूमने गए हो किसी लेक वगैरह के पास या कहीं कहीं गए हो तो वहां पे पानी मतलब कुछ पिया खाया तो फेंक दिया कि चला जाएगा, वो कहाँ जाएगा? कहीं जाके इकट्ठा तो होगा ना, तो इकट्ठा होगा तो वो वाटर पोल्यूशन तो कॉज करेगा ही। आप ये सोचो कि वो तो निकल गया, वो कहाँ जाएगा? वो कहीं तो रुकेगा ना जाके। तो ये चीज है। तो वाटर पोल्यूशन के लिए भी हम चीजें कर सकते हैं। हमें ये चाहिए कि अगर कुछ ऐसा हम थ्रो कर रहे हैं तो ऐसा ना सोचे कि वो जाएगा तो कहीं ना कहीं बह के चला जाएगा, तो ऐसा ना सोचते हुए हम उसको स्प्लिट ही ना करें, वहां पे फेंके ही ना, वहां पे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जगह होती है, वहां पे डिस्पोज ऑफ किया जाए। और वाटर पोल्यूशन, अच्छा ठीक है, वाटर पोल्यूशन से मेरे माइंड में एक चीज आ रही है कि हम लोग वाटर को वेस्ट भी तो कितना करते हैं, है ना? और मेरे ना एक मैम थे, तब हम जैसे हम लोगों को इतना ध्यान नहीं है, तो तब वो पूछते थे कि मैम बच्चे ये बताओ कि आप लोग जब ब्रश वगैरह करते हो तो टैप खुली रहती है या बंद? तो हम लोगों ने बहुत सोचा और सोचने के बाद आंसर यही था कि हाँ, टैप तो खुली रहती है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब ब्रश कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो वाटर टैप खुली है, वो खुली रह जाती है, ठीक है? अगर वाटर प्योरीफायर का जो पानी होता है ना टिप टिप करके निकल रहा होता है, तो वो कहाँ जाता है? वो सिंक में डाल देते हैं पाइप को कि वो बह रहा है, तो उसके लिए आप कोई कंटेनर रख सकते हो, वहां उसको यूज कर सकते हो, प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हो, ना पियो उसको किसी और चीज के लिए यूज कर लो, वो कहीं ना कहीं तो यूज होगा। तो वहां से वाटर जो हम लोग वेस्टेज करते हैं वो भी मैनेज हो जाती है, ठीक है? उसके साथ साथ जो वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन आपको वेल नॉन हो, आपको खुद को पता है, पर बात क्या होती है कि हम लोग अवेयर तो है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से मतलब एसएसटी में, साइंस में ये चीजें सब चीजें डिस्कस होती रहती है कि ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन सबको पता है। जो सबसे वो स्टूडेंट होते हैं ना, कोई कहता है मेरे को नहीं पता, उसको भी पता है कि वाटर पोल्यूशन की क्या टाइप्स हैं। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, है ना? हम लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पहाड़ों में कहीं घूमने गए तो खाया पिया फेंक दिया, तो कहीं तो चला ही जाएगा। पहाड़ी एरियाज में तो ऐसे होता है कि उड़ गया या कुछ ऐसा हो गया तो हो जाएगा, बट नहीं, वो तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कॉज कर रहा है, राइट? उसके बाद अगर हमने बहुत सारी बातें की है कि व्हीकल का यूज हम कर सकते हैं, प्लास्टिक, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? जो पेड़ लगाते हैं हम लोग, बहुत सी एक्टिविटीज ऐसे हमारे कॉलेज में तो होती है कि ट्री प्लांटेशन कर लो, ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटीज, तो उससे क्या होता है?
ट्री प्लांटेशन की एक्टिविटीज से कहीं ना कहीं वो चीजें कंट्रोल में आती हैं, कहीं ना कहीं जो डिप्लीट कर रहे हैं हम एनवायरनमेंट को, वही चीजें हम कंपनसेट कर पाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम सब लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है उसको खराब करने में। और हम सोचते रहते हैं कि हम आएगा पर्सन सफाई के लिए वो करेगा, या फिर गवर्नमेंट आएगी वो कोई स्कीम निकालेगी सफाई स्वच्छ भारत करवाएगी, तो उनको स्वच्छ भारत की जरूरत नहीं है, हमें स्वच्छ भारत करने की जरूरत है कि हम लोग खुद अपने घर को, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखें। अगर हम लोग घर पे बैठते हैं, हमारा बेड खिल रहा हुआ है, हमारा रूम खिल रहा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, उससे अनॉय होते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, गर्ल्स हो जाती है मोस्टली कि इरिटेट कर रही है ये चीज हमें, तो हम उसे उठाते हैं, साफ करते हैं, क्लीन करते हैं। सेम एज बाहर, अगर कॉलेज में भी बैठे हो, अगर आपको कोई रैपर दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, वो आपको अनॉय कर रहा है, तो अनॉय होने से अच्छा है या तो बोल के उसको क्लीन करवाओ, नहीं आप कर सकते हो तो आप ऐसा कर सकते हैं कि खुद से उठा के फेंक दो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब आप उससे छोटे हो जाओगे, वो किसी किसी में ही हिम्मत होती है वो करने की कि ये चीज गंदी हो रही है तो कोई बात नहीं, लाओ डस्टर या जो भी है उसे उठा के हम कर देते हैं। तो वो लोग बहुत ज्यादा, मुझे ऐसे लगता है वो लोग ज्यादा स्ट्रांग होते हैं जो अपने से खुद से कर लेते हैं या खुद से करवा लेते हैं, एज कंपेयर कंप्लेन करना बार बार। ठीक है, तो मतलब यही है कि हम दुनिया तो नहीं बदल सकते, बट हाँ हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद को चेंज करेंगे तो दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। और अगर हम खुद से सफाई करना स्टार्ट करेंगे तो आप नोट करोगे कि आपका सराउंडिंग क्लीन रहने लगा है, आपको क्लीन रहने की, क्लीन रखने की आदत हो गई है, तो इससे जो पॉल्यूशन है वो खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। Professor Komal for sharing such valuable information. Now I would like to invite student for speech competition. I would like to invite Sanpreet. We do not inherit earth from our ancestors, we borrow it from our children. With these words, bright and blissful afternoon to each one present here. Today I am here not merely to deliver a speech, but to showcase a mirror of our shared reality, as our topic for discussion is pollution control. Today, the world is gasping for breath, pleading for restraint, and asking for support and action, not just sympathy. Pollution is no longer a chapter in environmental science textbooks. It has become a reality of the everyday world. From dust-laden skies of Delhi to the plastic-choked islands of Pacific, today the world is being depleted by pollution. Even as per a WHO report, over 99% of people all around the world breathe air which is not safe for consumption. And this single statistic is enough to showcase that there is no time to sit and sympathize. It is a high time to act today. Because if we don't, we won't be left with anything in the future. Also, alone air pollution is responsible for more than 7 million deaths all around the world which are premature. A figure which is larger than population of many nations all around the world. Even the soil beneath our feet in fewer decades will not be able to harvest for us. Then the reality is going to be more abysmal than it is today. My dear friends, if pollution is the disease, complacency has been its carrier. We say that the other person will save the earth. But who will start? Who will take the initiative? We should not pass the parcel to each other. It is a time to act on individual basis, to save our futures and our generations ahead. But the story is not without light. Nowadays, innovation and technology is growing at a pace which is going to save the world. For instance, in countries of Sweden and Denmark, over 90% of household waste is recycled, and composts were a thing in the earlier times. Nowadays, even in Costa Rica, over 98% of energy comes from renewable resources, which is a great achievement of mankind and innovation. To conclude, I would like to say that the final pillar of hope is youth. We should stand together, act for this, and fight for this. Because as per the words of UN Secretariat, there is no plan B. Why? Because there is no planet B. So to conclude, I leave you with very powerful words. The greatest threat to our planet is not pollution control.
In fact, it is a belief that the other person will save Earth. May we become the other person to take initiative and save the world. Thank you. A clean earth is not a choice, it is our responsibility. Respected Director Sir, worthy teachers, and my dear friends, good afternoon to one and all present here. Today, I am going to deliver my views on the topic that concerns all of us, that is pollution control. Pollution is not just a word, it is a warning that if we don't take any initiative today, then it will be unpredictable and harmful for our future. Pollution is now a global problem. Its effects are clearly visible in many cities around us. We see smoke in the air, plastic in the water, and the loud noises everywhere and the garbage on the streets. Slowly, pollution is turning our beautiful earth into a dangerous place. That it damages the natural things that keep us alive, like air, water, land, and soil. When these things get polluted, the world becomes unhealthy for the humans, animals, and even for the plants. Let us reflect on the air pollution. Air pollution is increasing day by day because of vehicles, factories, burning of waste, and construction activities. Cities like Delhi, Mumbai, and Ludhiana face every year high levels of air pollution. In winter, Delhi air becomes so bad that schools are remain closed there, and the people using air purifiers in their homes and workplaces. Water pollution. Water pollution happens when dirty water and chemicals from industries is released into the rivers without any treatment. The Yamuna River in Delhi and the Buddha in Ludhiana are examples where pollution has destroyed the natural beauty of the water. Many fishes died, and the people who used this water fell sick and suffering from the diseases. Soil pollution. It is caused by excessive use of chemicals, plastic waste, and garbage dumping. Cities like Chennai and Kolkata struggling with large garbage landfills that spread harmful chemicals into soil and making it unfit for the farming. Noise from traffic, loudspeakers, machines also affect some mental peace. People living near highways or busy markets suffer from stress and sleep problems. Pollution affects our health, our future, and our environment. Children and adults are suffering from the asthma, heart diseases, allergies, and lungs diseases, and even animals lose their homes, and there are uncountable problems caused by the pollution. If we want a clean and safe future, we must start acting today by taking small steps like we should plant more trees, use public transports, prefer natural products, compost kitchen waste at home, and use reusable cloth bags, stop burning garbage, save water and electricity, throw waste only in the dustbins, aware people about the pollution by campaigns and the rallies in schools and the colleges. Reuse and recyclable materials should be used. If we take small steps day by day, then we can create a big change over time. The Government of India has already launched several initiatives like Swachh Bharat Abhiyan in 2014 and Namami Gange program in 2015 and the National Clean Air program in 2019. To conclude, let us promise that we will not ignore pollution anymore and we will not wait for the others to act. We will act instantly and clean the area. Because saving the earth is not the duty of the government alone, it is the responsibility of each one of us. If we act together, we can make our earth green and clean and healthy once again. Thank you.
directors, worthy teachers, and my dear friends. Today I am going to speak on very important topic, pollution control. Pollution means making our environment dirty and harmful. It includes air pollution, soil pollution, water pollution, and noise pollution. These forms of pollution are mainly caused by human activities such as vehicles, industries, burning waste, plastic use, and cutting trees. Pollution has become a serious threat to our health. It causes breathing problems, diseases, climate changes, and farms, animals, plants. If we do not control pollution today, our future generation will suffer. So what we can do? First, we must reduce the use of plastic and switch to eco-friendly products. Second, we should plant more and more trees. Second and third, we use public transport, carpool or bicycles to reduce air pollution. Fourth, we should avoid wasting water and keeping rivers and lakes clean. Finally, everyone must follow the rules of reduce, reuse and recycle. Pollution control is not the responsibility of the government alone. It is the duty of every citizen. If each one of us takes every small steps, together we can create a clean and healthy green environment. Let us take a small step today so that our earth can breathe tomorrow. Thank you. All present here. Today I am here to deliver a speech on very important topic, that is pollution control. Pollution has become one of the biggest challenge of our times. Whether it is air pollution, water pollution, soil pollution or noise pollution, each of these is harming our environment and most important, our health. Every day, toxic gases from vehicles and industries pollute the air breathed. Chemicals and plastic waste pollute our rivers and oceans. Soil becomes infertile due to harmful pesticides and noise from traffic and machines, which disturbs our peace of mind. Therefore, a pollution control is not just a duty, but it is a necessity to control the pollution. To control pollution, we must take both individual and collective actions. At the individual level, we can reduce the use of plastic, save electricity and water, and also use eco-friendly products. After that, we should plant more and more trees and avoid burning waste. Whenever it is possible, we should use public transport so that as cycling or walking to reduce the pollution. Moreover, at the community level, government level, strict laws are needed to regulate the industrial waste, to promote renewable energy, and to improve waste management and encourage recycling. Schools and organizations should create awareness, and companies must adopt cleaner and greener technologies. Most importantly, pollution control requires a change in our mindset so that we must understand the protecting nature as same as ourselves. In a sense of this, I would like to say that a clean environment is not just a responsibility, but it is our duty towards our future generation. Let us take a pledge today to reduce the pollution and make clean, green environment so that to live healthier and happy life. That's all. Thank you. Director sir, teachers and my dear friends, today I am going to speak on a very important topic, pollution control. Pollution is one of the biggest problems in the world today. It means making our environment dirty and unsafe for living. Pollution can be of many types such as air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution. All these forms of pollution harm our health, affect animals and plants and disturb the balance of nature. The main cause of pollution are human activities. Factories release smoke into the air, vehicles release harmful gases, plastic waste pollution. If we do not control pollution, our future will be in danger. Therefore, it is our responsibility to take steps to control the pollution. First, we must reduce the use of plastic, we should plant more and more trees, and we must save water. The government alone cannot solve this problem. Every citizen has to participate.
Pollution control is not a choice, it's our responsibility to protect the planet and our future generation. Thank you very much. One and all present here. Today I will be giving a speech on pollution control, a united effort and urgent action. In today's dynamic and ever-changing world, pollution is becoming one of the most dreadful and hazardous diseases. Pollution is the contamination of nature and it has been accelerating at a faster pace, destroying our ecosystem and nature each and every passing day. To top it off, we humans have a huge role in giving birth to such a dreadful disease. Whenever we eat or use something, we tend to throw the waste on the streets, roads, ocean without having a second thought and neglecting our nature instead of properly dumping them in the garbage bins. The industry's unhealthy, chemical-infused gases makes it harder for the whole of ecosystem to breathe. It is us who have to stand up against such pollution and bring about civic sense amongst the society to solve this problem. Take Delhi, our nation's capital, for example. Its AQI has reached to above 300 each and every passing day, and people are having difficulty in breathing in their own houses without an air purifier. Pollution can be controlled in many ways, starting from our own homes. We have to start discarding our waste properly in the garbage bins instead of throwing it on our streets. We have to use proper methods and industries should be necessitized to use exhaust filters as well. Government and other college can arrange campaigns and green drives for the community to help them spread awareness about it. Most importantly, it is essential for us to understand the need for planting trees and how pollution is a deadly threat which can lead to ecological catastrophe and Earth's slow death. At the end, I would like to say that it is high time to act instead of sympathizing. I hope my speech made clear how alarming the situation is and we will all fight together to stand against it. Thank you. Present here. Today I want to express my views on the topic pollution control. So what the question arises, what is pollution? Pollution refers to the dirty air and water, land that pollutes our earth and harms our health. And there are four types of pollution: land pollution, air pollution, water pollution and noise pollution. These all categories can make human life difficult. So now we discuss it all. Firstly, air pollution. Air pollution comes from cars, factories and burning trash. Water pollution happens when dirty water from homes and factories goes into rivers. Land pollution is the trash that people throw on the ground and it reduces the fertility of the soil. Noise pollution is unwanted excessive sound that disturbs the daily life and harms health. And what are the various harms of these all pollutions? Dirty air makes it hard to breathe. Children and old people suffer asthma, and dirty water can cause stomach sickness and spread diseases. Pollution also makes the climate hotter, and hotter climates leads to floods. And it also leads to skin infections also. And what are the various causes behind it? Using too much petrol in cars and buses, throwing plastic bottles, and we have to use cloth bags instead, and using too much electricity that comes from coal and oil. What can we do? Walk or use public transport for saves fuel and keeps the air clean, save energy at home, turn off unnecessary lights and off it when you leave the room. More plantation can reduce the pollution and it provides fresh air. Say no to plastic bags and keep a cloth bag and water bottle. So the main thing is recycle and reuse. At the end, I want to conclude, taking small corrective action also help to make our country pollution free. And like walking, saving energy,
planting trees and throwing waste at the right place, the whole world become cleaner, safer, and for us, for our future generations. That promise to all that we can make our country pollution free. We cannot depend on our governments to make our country pollution free, because we have to solely take a decision that we can't do that things which is creating the pollution and all. We have to teach small kids to do that things which reduces the pollution. Thank you. For participating in the speech competition. Everyone convey a very good